Yeah, hello guys, what's up? Uh, तो कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप सब? मैं थोड़ा कैमरा ऑन कर देता हूँ। और ये हाँ, तो हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय लाइफ ऑफ डे 30 ना। हाँ, डे 30। सो या इट्स डे 30। तो बेसिकली मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि कोई है कि नहीं। ना। सो हाय, दिस इज मी द एंटी हैक्स and I have started my live channel and blah blah blah. Okay, so हो गया इंट्रो। ऐसा करते हैं आज थोड़ा अलग तरीके से एनालाइज करते हैं मार्केट को। ठीक है। ओके, तो एक एक ये एरिया है, एक ये एरिया है जो सपोर्ट जोन है। ठीक है। या डिलीट। ठीक है। एक ये एरिया जो सपोर्ट जोन है, दूसरा एक एरिया बेसिकली ये जो एरिया है वो यहाँ पर है। ठीक है। वैसे 1 डे का देखते हैं क्या सीन है। या फिर 4 आवर्स में मैं पिछले का देख सकता हूँ। या तो एक देखता हूँ कैसा क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। सो बेसिकली इस एरिया को ये ब्रेक कर सकता है। ओके, तो हाँ, अभी जो है वो इस जोन पर है। ठीक है, जो कि थोड़ा सा आगे पीछे, चलो ठीक है, अब सही है। एक ये एक एरिया मेरा निकल गया है। अब देखते हैं 45 मिनट में। ओह, चूंकि बहुत पास में है। ठीक है, बहुत पास में है। और थोड़ा कम करते हैं। हाँ, यहाँ से मे भी रिवर्सल आ सकता है, और रिवर्सल नहीं आएगा तो एक सपोर्ट बनाकर ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इसको क्रॉस करेगा तो हम एक ये बना सकते हैं आई थिंक। ठीक है। और अगर 30 मिनट में देखें हम, तो एक दूसरा वाला है, उसको भी मार्क कर ही देता हूँ। बेसिकली ये दो चीज है जो कि एक दिखा रहा है अभी तो, खैर तो ठीक है ये। ओके, और एक 4 CP का भी पैनल दिख सकता है हमें। हम BTC को शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अगर दूसरी कैंडल है, 15 मिनट का है ना, fair। तो हम आते हैं 5 मिनट पर। बेसिकली एक हमें यहाँ पर एक रिवर्सल दिख सकता है अगर 4 मिनट के बाद भी। अगर ये जो कैंडल है, इस वाले एरिया को अगर ब्रेक किया, ठीक है, इस वाले एरिया को अगर ब्रेक किया,
yeah, we can plan a trade in डाउन साइड। अगर यहाँ पर कैंडल क्लोज किया तब, क्लोज नहीं कर पाया तो फिर अलग बात है। ठीक है, क्योंकि हमें एक दिख रहा है कि बहुत, फिर उसके बाद अलग एनालिसिस लगाऊंगा। ठीक है। हाँ, ये जो है मेरा एक 4 CP का पैनल दिख रहा है मुझे। ठीक है, बट ये 4 CP का पैनल तभी बनेगा जब ये क्रॉस कर देगा नीचे। ओके, इसको यहाँ पर इसको क्रॉस करना होगा और फिर देखते हैं बाकी। मार्केट तो बहुत देर से नीचे से ऊपर आ रही है, पर ये कहाँ से आ रही है कैसे पता चलेगा? नीचे का कहाँ था देखो जरा, 4 आवर में प्रीवियस लो किधर है? ऐसे तो लो यहाँ पर है, 62 पर। अभी 63 पर भी है एक लो। डोंट थिंक आज गया होगा 63 पर। देखता हूँ जरा ये कौन सा एरिया। ठीक है, इसमें देखता हूँ ये स्वीप हुआ है वो कौन सा एरिया। ओह, तो ये वाला ये एरिया है, ये वाला ये एरिया। और एक हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक हैमर टाइप दिखता दिख रहा है, एक हैमर टाइप बनता दिख रहा है। और 45 मिनट में भी एक हैमर बनता दिख रहा है। ठीक है। और और 30 मिनट में, 30 मिनट में नहीं, 30 मिनट में फिर भी टाइम लगेगा, अभी यही बन रहा है। बाकी यहाँ 15 मिनट में एक दिख रहा है हमें कि एक और एक ये बन सकता है। बाकी अभी तो कुछ इरादा नहीं है इस वाले में, क्योंकि आई डोंट थिंक ये 1 मिनट में नीचे आ जाएगा झट से। इट्स टू हार्ड टू से दैट कि मार्केट जो है नीचे आएगा। हालांकि देखो, हालांकि यहाँ पर ये नेगेटिव इंगल्फिंग दिया है इसने, और ये एक हैमर बना रहा है जो कि मार्केट को ऊपर की तरफ ही डालेगा। 30 सेकंड रुकते हैं, फिर उसके बाद बैक टेस्टिंग में चले जाएंगे। ठीक है? और एक ये है, तो यहाँ पर एक मैं प्राइस अलर्ट लगा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं प्राइस अलर्ट लगा दे रहा हूँ। अगर आएगा तो मुझे मैसेज आ जाएगा। एंड बेसिकली मैं आज था हॉस्पिटल में दिन भर, इसकी वजह से मैं दिन में आ नहीं पाया लाइव। मेरा ऑलमोस्ट पूरा टाइम हॉस्पिटल में ही गया। चलो भाई, अब गोल्ड में देखते हैं क्या चल रहा है। सबसे पहले तो एक आज का हम ये एक मार्क कर लेते हैं। बेसिकली हमारा जो पहले का जो एनालिसिस था वो आई थिंक वर्क किया है लग रहा है। 27 तारीख। अच्छा, 45 मिनट के टाइम मैंने क्या? ओह वाह, दैट्स नाइस। हाँ, तो वैसे ही उस टाइम मार्केट यहाँ पर था, इसको इसने रीटेस्ट कर कर ऊपर गया है। हम्म, एक्चुअली ये 27 तारीख का है और मार्केट उस टाइम यहाँ था।
और ये मैंने कैसे लगाया था, इसको कुछ इस हिसाब से लगाया था। इसको कुछ इस हिसाब से लगाया था मैंने। मैं इसको अपने ग्रुप में भेज देता हूँ वैसे एक बार। ठीक है भाई, लाइव मैं कब खत्म कर दूंगा भाई, नो वन नोज भाई। कब प्राइवेट कर दूंगा लाइव को, कोई नहीं जानता। तो जब तक तुम लोग देख रहे हो, तुम लोग देखो। बाकी मैं लाइव प्राइवेट कर दूंगा भाई। मैं लाइव रखूंगा नहीं, मेरा ब्लॉगिंग का ही चैनल रहेगा। बाकी मैं लाइव तो डेली आऊंगा ही, उसमें तो कोई मसला नहीं है। मैं ट्रेडिंग की जर्नी जो है वो रहेगी मेरी, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। लाइव में हमेशा आऊँगा 6 मंथ के बाद भी। बट द मसला इज, ये परपेचुअल कब ओपन होगा भाई? रिमूव करो सारे को। देखते हैं थोड़ा 4 आवर में यहाँ पर है। ओके। अच्छा तो अगर यहाँ पर ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, है ना? नहीं यहाँ पर नहीं। हाँ यहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ था। यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ था, कैसा रिएक्शन था इसका। हम्म। बेसिकली यहाँ पर कैसा लेट ही हुआ है, और कुछ तो खास हुआ नहीं है यहाँ पर। मैं अलग अलग बेसिकली मैं अलग अलग टाइम फ्रेम को देखकर अलग अलग तरीके से एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई डोंट नो, क्या पता कुछ कुछ क्या पता कुछ आउटपुट निकल जाए। और मैं ऐसे सोचा हूँ कि 1 घंटे के लिए मौन व्रत रखूंगा, आंख बंद कर कर, completely in silence, no extra burden, nothing, no sound, and we'll see। या टाइम लैप्स लगा कर रखूंगा ताकि मेरा रिकॉर्ड भी हो जाए। बेसिकली यहाँ पर एक स्वीप हुआ है मार्केट, और वी कैन से डैट कि एक 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 हैमर भी निकला है। यहाँ आफ्टर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पक्का होगा। इस वाले में आफ्टर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पक्का होगा। जी। बेसिकली मैं इसको लेकर चलता हूँ, ठीक है। एक शूटिंग स्टार। ओके। शूटिंग स्टार बस बेसिकली ये स्प्रिंग टॉप टाइप है। क्या हुआ ना? तो बेसिकली यहाँ पर देखते हैं कुछ। ये शूटिंग स्टार है, इधर कोई है शूटिंग स्टार नहीं है। इधर कौन सा कैंडल है? जो ना हैमर। ओके। तो ये एक यहाँ तो हैमर है, बट इस वर्क की और ये फेल हो गई। ये हैमर वर्क किया है। आई डोंट नो ये हैमर, हैमर लेंगे कि नहीं। बहुत सारे ट्विटर ने इसको इसको हैमर नहीं लेता, इसको शूटिंग स्टार ही लेता है। ओके। तो आई डोंट नो, बट हाँ अगर देखा जाए तो ये और ये ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप है।
ठीक है, और वो उसने उसको क्रॉस भी कराया, गिराया। ठीक है, ऐसा कुछ खास इंटरवल तो नहीं दिख रहा है ना। और एक एक ये है। हम्म, यहाँ तो पॉजिटिव इंगल्फिंग है, नेगेटिव इंगल्फिंग है, बेरिश इंगल्फिंग है, अगेन पॉजिटिव इंगल्फिंग है, और फिर ये पंप पंप कर गया मार्केट। फिर ये नीचे आया। हम्म। फिर ये नीचे आया। ओके, एंड फिर सेम से यही स्ट्रक्चर दे रहा है। हाँ, कैन से डैट। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से देख सकते हैं, हालांकि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हाँ, इसको हम खुद से समझने की कोशिश कर सकते हैं रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर भी उसी टाइप से structure है। ये हमारे उसके बाद बड़ी कैंडल। ठीक है, फिर रीटेस्ट किया इसने, और फिर उसके बाद इसकी वीक को तो खैर नहीं ब्रेक करा। ठीक, और उसके बाद फिर से वही बड़ी कैंडल। ठीक है, तो इट कैन बी ये फेक आउट था, और ये जो है रिवर्सल है। ठीक है, तो मैं इसका देख के बताता हूँ पीछे का मार्केट कि कितना आना चाहिए एटलीस्ट। परंतु माई, अभी मैं देखा तो नहीं हूँ, यहाँ से एक, यहाँ से थोड़ा ऊपर आया है, नीचे आया है, तो मैं यहीं से लूँगा। यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक ही लेते हैं, देखते हैं अब कि क्या हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर, वैसे यहाँ से नहीं, सब रीटेस्टिंग एरिया है, यहीं से लेंगे हम। बेसिकली आया है मार्केट, कह सकते हैं कि आया है मार्केट। आया है मार्केट कह सकते हैं, बट ना, आई डोंट नो, आई डोंट नो सीरियसली। अरे मुझे यार हर एक महीने गूगल की तरफ से एक मुझे मैसेज आता है कि आपका बिल है, उससे आपको पूरा करना है, उसका अब से आपको पे करना है। मैं क्या करूँ, ये बताओ। डेली बिल आता है, मुझे पे करना है, लिखता है वो हैव टू। हम कंफ्यूज दैट व्हाट टू डू। मैंने पे, ये मैंने मेल करा, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास बिल है ही नहीं, तुम्हारा बिल ही नहीं है, ऐसा करके वो बोल रहे हैं। बेसिकली बहुत सारा फंडा है भाई। और क्या बड़ी।
Mm. Mm. इसके लिए यहाँ से रिवर्स ला सकता है। क्या ही बताऊं, मन नहीं कर रहा है करने का। पता नहीं, लिटरली मैं अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूं, कैसे प्रेडिक्ट करूं मार्केट को, क्योंकि मुझे बैक टेस्ट में भी कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई लिटरली मैं थोड़ा बात करता हूँ चैट जीपीटी से भाई। मैं चैट जीपीटी से थोड़ा बात करता हूँ, क्या करना चाहिए मुझे। ओके, तो दिस इज माई चैट जीपीटी, और मैं कुछ बात करता हूँ, पूछता हूँ क्या है सॉल्यूशन। गुड। No, we have recently started a funnel journey. We are backtracking every day of your YouTube, and we're trying to transition just learning concept, actually executing, constantly hitting problems. At this stage, they're completely normal. Tell me everything that's happening. Don't worry, it feels. Yes, for example, are you struggling to find valid setup? Are you seeing a setup but don't know whether to enter it? Are you changing your rules while backtesting? Are you getting too many losing pairs? Is it difficult to mark some marks concept like POC or capability? Like computer entry, I find that study work on one pair but not another. Okay, or are you having trouble with the software itself? Yes, I know you have been learning MMC upgraded with the here's something I want you to keep in mind. Many traders make this. They try to identify every concept to the chart before taking a trade. Instead, your process should be something like this. Determine the higher time frame bias, mark the key liquidity levels, wait for market structure confirmation. Basically. Find your entry zone OBF, PG, breaker, whichever your strategy utility financial targets the liquidity. If you skip step one and changing your bias, every chart will look different and backtesting become. You skip step one or keep changing your bias, every chart will look different and backtesting becomes. Let's figure it out. What exactly is confusing you? Which parts is backtesting? Okay, basically I use only BTC and BTC and USD. Okay, and and I am struggling to
find a valid find a valid setup. Are you changing your rules while backtesting? Consider don't know whether to enter and struggling with find the same concept like after effects peanut pattern. I am unable to find it more. I have just find two to two to four patterns, and I'm thinking like I can find a very little thing, and I am unable to read the charts. Or actually, I think you have reached the point where every serious trader feels like fighting. And from what you have told me, I don't think your problem is SMC or MMC. Your problem is that you are expecting to see advanced concept before you have learned to read and language to that chat. That is not problem. Only I only find two to four problem. That's normal. Opinion is not supposed to appear every day. Okay, think about it. If BTC created peanut every 10 candle, then everyone would be rich. Yeah, some patterns occur once every few weeks, once every few days, sometimes one a week, sometimes not at all. Finding only two good peanuts while backtesting is not bad. It actually means you are being selective. From two, I can't read the chart. This is your real problem. Imagine giving someone an English novel. If they only know 20 words, they will say, I can't read English. The problem is not the book, the problem is vocabulary. Trading is exactly the same. Right now, your vocabulary is something like double bottom, double top, peanut, engulfing, trend line. But the market we speak with impulse, correction, liquidity, structure, momentum, expression, expansion, fake outs, order flow. You are trying to read a full sentence while knowing only a few words. Problem 3. You are searching for peanuts. This is the biggest mistake beginner make. When you open BTC, your brain says, where is the peanut? Instead ask, what is the market doing? That's a completely different question. Here's how I want you to backtest from tomorrow. Forget SMC, forget MMC, forget entries. For 1 week, do nothing except answer this question on every chart. Is the market moving up, down, or sideways? Okay. Where did buyers become aggressive? Where did seller become aggressive? Is the market making higher highs or lower low? Where did price suddenly accelerate? That's it. No trade, no entry, just observation. If you can answer these 5 questions constantly, you will understand 70% of chart trading. Here's another mistake you are doing. You have been studying double top, peanuts, wages, cappage, QFL, supply and demand, risk management. That's a lot. Your brain has become a huge library, but it has not had enough time to connect those ideas on a live chart. Knowledge is not equal to pattern recognition. Pattern recognition comes only after looking at thousands of charts. What I would do if I were monitoring you, since I know you are documenting your journey and want to become constantly profitable, I temporarily change your routine. Week 1, no trade, no searching for patterns. Spend 1 to just reading charts. Week 2, make a structure only. Higher high, higher low, lower high, lower low. Week 3, add liquidity. Week 4, add entries.
This progression is much easier than trying to apply every concept at once. One more thing, I remember you told me you were learning MMC upgraded with so the monitors already have 5 to 10 years screen time. When they look at chart, they instantly recognize what's happening because they have seen similar situations thousands of times. You are trying to compare your first few hundreds hours with their several thousands hours. That's not fair. I have a suggestion. I think we should build your own chart reading framework instead of following MC blindly. We can spend the next 30 days doing this. Learn the anti structure, understand momentum, spot liquidity, identify valid setup, execute and review trades. By the end, you won't be asking where is the peanut, you will be asking what story is this chart telling. That's the mindset that experienced traders develop. Okay, okay, so do I have to do these things on live chat or backtesting? Backtesting, definitely backtesting. In fact, I would say 80 to 90% of learning should happen in backtesting right now. Since you are already using BTC and SHA USD stick with those. Here's the reason why not the live chat. On a live chat, you can see one candle every few minutes. You get impatient, you start forcing trade because nothing is happening. It takes weeks to see enough example in backtesting. You can see 6 months of price action in an hour. You can pause, you can rewind, you can compare different market conditions. That's exactly how pattern recognition. A routine. Here's the routine I want you to follow. Hide the future candles, don't look ahead, move one candle at a time. So basically, I'm going to order. मैं अभी जा रहा हूँ खरीदने एक कॉपी जो कि 70 GSM का है और वो थोड़ा छोटा है बट ठीक है आई गेस सही है स्कूल होम एंड ऑफिस क्वेश्चन मुझे 1 अगस्त को रिसीव हो जाएगा चलो 2 क्वांटिटी ऑर्डर मार आई एम गोइंग टू ऑर्डर ये ऑलमोस्ट मुझे 100 रुपये का पड़ेगा ओ भाई मार्केट प्लेस का फी भी लग रहा है कोई बुक भी करना है क्या ऑर्डर देखता हूँ ठीक है भाई हटाओ साला 5 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है तो क्या करूं? भाई मैं बेसिकली इसको ऑर्डर करने जा रहा हूँ जो कि मेरा जर्नलिंग होगा आज से और अपकमिंग मैं जो भी नोट कर रहा हूँ जो कुछ भी करूँगा ऐसे भी करूँगा सारा कुछ को मैं नोट करूँगा तो एक मुझे छोटा सा डायरी चाहिए होगा जो ऑलमोस्ट मैक्स ऑफ द टाइम मेरे पास रहेगा जी मैं इससे मैं करता हूँ ऑर्डर एड्रेस वगैरह मिला लेता हूँ मैं तो मैं आज 30 तो मुझे 1 तारीख को रिसीव हो जाएगा तो बेसिकली सही है एक तरह से डिलीवरी एड्रेस
Yeah, I have to change this number. 74 89 25 Secure Cyber Cafe near middle school. Secure Cyber Cafe, Barun Bihar, Aurangabad. Use this address. So basically, he will call me. Actually, no one will call me. Okay, okay. Right now, here's the routine I want you to follow. Hide the future candles. Don't look ahead. You can pause, rewind, and compare market conditions. Okay, okay. Basically, ठीक है. On live, you can see takes weeks to see enough example. In backtesting, you can see 6 months of price action in an hour. You can pause, you can rewind, you can compare different market conditions. That exactly how pattern recognition develops. Here's the routine I want you to follow. Step 1, hide the future candles. Don't look ahead. Move one candle at each time. Ask yourself, what's the trend? Are buyers or sellers stronger? Why is the last swing high? Yeah bro. अच्छा देखते हैं. जा रहे हैं 5 मिनट में. 5-10 मिनट में जा रहे हैं. अभी तो नहीं जा पाएंगे. 5-10 मिनट रुकना पड़ेगा कम से कम. ठीक. तो ऑर्डर प्लेस हो गया है. What's the trend? Are buyers or sellers stronger? Where is the last swing high? Where is the last swing low? Don't think about entries. Step 2. When something interesting happens, suppose price suddenly shoots up. Stop. Ask why did it move like that? Note. Can I buy here? The small change in thinking is huge. Step 3. Okay. So label what you see. Even if you are wrong, write things like uptrend, pullback, strong bullish candle, consolidation, breakout, rejection. Don't worry about using perfect SMC terminology. Only after that, start asking, is this a pennant? Is this an engulfing? Is this liquidity? Is this BOS? Patterns should confirm your reading, not be the starting point. I also want to remove one pressure from my mind. I'm unable to find many peanuts. Okay, good. You said. Good. Don't try to. For the next week, I don't want you to look for any pattern. Instead, your goal is, can I explain what the market is doing in plain English? Whenever price was falling, then seller become weaker, buyers stop, and price broke the previous swing high. Now it's pulling back. If you can describe the chart like that, you have started reading it. Here's the challenge I want you to give you. Every day, 30 minutes with the chart, no trading, 30-minute backtesting, only one setup if it naturally appears. 50 minutes, write down what you learned. Don't measure success by number of trades, number of patterns. Measure success by, did I understand today markets better than yesterday? That mindset will make you improve much faster. One last thing, actually like us to do something together for the next month. You can send me one confusing BTC or SAO USD backtesting screenshot every day, and we will analyze it together. I won't suggest tell you whether it's right or wrong. I want to teach you how to think when reading in the chart. I think after 20 to 30 charts, you will notice something surprising. You will stop hunting for pattern and you will start understanding the story the market is telling. That's when trading begins to feel much less is confusing. Okay,
So now, okay, got it. I wanna tell you one more thing, which is I'm doing back test on pre-made chart. Means I'm I'm not replaying bar replay. I am just seeing the charts. I think I am doing wrong backtest, right? Backtest, right? Yeah, this is probably the biggest reason you are struggling. And the good news is that it's an easy fix. When you look a completed chart, your brain already knows the ending of the story. This is called hand hindsight bias. Imagine watching a football match when you already know the final score. Every pass and mistake suddenly seems obviously. Trading work the same pattern. Same way. For example, when you see this on a completed chart, you think, of course, I should have bought there. But at that point in time, trader did not know a huge rally was coming. That's why replay mode is so valuable. Here's what I recommend: 20% replay mode. This is where you build your chart reading skill. Hide the future candles, advance one candle or a few candles at a time. Ask what's the trend, what's the last swing, what might happen next. Record your idea, reveal a few more candles, compare what happened with what you expected. Remember, complete set chart review, complete chart are still useful, but for a different purpose. Use them to answer questions like where did the biggest move start? How did that? It's like studying game footage after a match. Here's the routine I'd follow if I were in your position. Since I have been, since we have been, since we have been, since we have focused on BTC and Zowl, I'd keep it simple. Every day, 2 hours, 1 hour replay mode. Replay one day of BTC or Zowl. No rushing. Make prediction before revealing the next candle. 2 hours chart review. Look at completed chart. Find one or two strong moves. Ask why did this move happen. Market structure, momentum, and liquidity. This combination teach both decision making and pattern recognition. One thing I want to change you on. You once told me you wanted to become someone who can truly read charts, not just memorize concepts. Reply mode is where that skill is built. Whenever you reveal the next candle, pause and make yourself answer. If this were live, what would I do right now? Even if your answer is, I would wait. I have no idea. The trend is not clear. Those are good answer. Professional traders spend a lot of time doing nothing because they don't see a valid setup. One more suggestion that I think I will spend up your progress for the next 30 days. Don't try to backtest 100 trades. Instead, backtest 30 charts deeply on which chart write down. Market bias structure. Okay, where liquidity might be. If you do for just 30 charts, you will learn far more than someone who rushes through 300 without really understanding what they were seeing. I only think this change from looking at finished chart to thinking candle by candle.
This will make the biggest difference in your chart reading ability. Okay, so uh, how do I do bar replay? Because in because in TradingView they ask for in TradingView I need to buy subscription to bar replay. Yeah, this one trading the biggest limitation of free plan. Trading restricts intraday bar replay like M1, M5, M16 to paid plans. The replay feature exists, but the amount of replay intraday history depends on your subscription. If you don't want to buy TradingView, since you are already using MT5, you feel funded account. This is actually a great solution. Free tick by tick historical playback, one kernel at a time, no hindsight bias, perfect for Sao history if you broke previously, it provides history. In many ways, it's a better than just scrolling through finished chart. Replay mentally on TradingView. If you must use the free trading plan, you it into the chart, cover the right side of your screen with a piece of paper or a browser window. Move the chart slightly to reveal a few candle at a time. But what happens next before revealing? It's not good as true replay, but it's much better than after use dedicated replay platform. There are platforms built specifically for historical replay and backtesting, such as FX replay, which many price action traders use. They provide much smoother replay experience than using manually scrolling chart, although they may require a subscription depending on the plan. I would recommend knowing your current stage. I would not spend money on trading you just replay. I'd rather see use tester for replay and execution price. Use trading or plan, and drawing levels and reviewing. That's give you a strength of both platform with paying you for another subscription. I have one question. Which Meta5 broker are you using for backtesting? You mentioned NYS, your funded account. Are you backtesting on NYS MT5? NYS MT5. Yes. Yes. On NYS MT5. You tell me, I can show you the best way to set up. Perfect. Actually making things easier. Since we are using NYS, here's what I would do if I were coaching you. For the next 2 weeks, don't focus on taking trades. I don't even want you to worry about buying or selling. Your only goal is read the market, open your NYS, press form for old historical data if available. Scroll back, position 25, zoom it, by, sorry, by, yes. So basically, like, गजब का करता है भाई ये आवाज.
अच्छा. Oh, okay. So phase one next 2 weeks. Don't focus on trading here. Open your NYS75. Press home 2 times to load. Vertical type. Scroll to a date. For example, January 25. Transfer export advisor. Yes. To manual place trade during play traders usually use trading simulator EA. Ins- Inside the strategy, which is the strategy just a sport visual playback. To the right of the biggest the mistake I don't find any biggest thing if I get replay mode. So if you want to true replay on Meta5, I have a built-in strategy tester. Designed for expert advisor. Yes. To manually place trade during replay traders usually use a trading simulator EA inside of the strategy tester. The strategy tester supports visual Lego statistical data, which manual replay requires a similar EA rather than the platform alone. Some traders use free simulator EAs such as FX, those simulator are paid to like soft for FX to practice manual trading during replay. But here's my advice: don't install those yet. Why? Because the right now your biggest challenge is not execution; it started. Here's a mistake I don't want you to make. When you think I get replay mode, I will become good. Replay mode is tool, not the skill. The skill is available. Here, I would recommend the video since you are already making a one training journal and practicing every day. I think you should create a structured 30-day chart reading bootcamp. Every day would have one small objective. For example, day one identify trend, nothing else. Day two mark swing high and swing low. Okay, spot momentum shift, recognize consolidation, identify. Only after you have mastered those would we start adding SMC concept like POS, or logical. I think approach will. Which time frame do you usually backtest on? The answer will determine the exercise I give you. Because reading on M5 chart is very different from reading H1. Firstly, tell me that how I use this MT5. It's really so confusing. And how do I do power replay on MT5? I completely understood when you first open MT5, it feels like looking at airplane cockpit. Let's simplify it. First, an important thing to know. MT5 does not have trading with style bar replay button. The replay in MT5 is done through the strategy tester visual mode, and and by itself it's mainly intended for testing expert advisor. Manual trade during replay, people using installer simulator ES. So if you are expecting a one-click bar replay button like trading view, you won't find one. Since you are a beginner, I recommend you
Learn MT5 itself day one. Don't even think bar replay. Don't even think about replay. Learn opening charts, changing time frame, zoom in, zoom on, scrolling, drawing trend line, adding horizontal line. Should you feel comfortable moving around the front? Should you load more history? Select time frame. Orange one. Good place to start. Press the home keys several times. Press the home keys several times. Where is the home? I don't mean a button instead of MT5. I mean home key. Home key on your keyboard. On a standard Windows keyboard, it's usually negation cluster. Delete home and paste. I don't think I have a home page. Plus, okay, so do you really think that I have a home key button? इसके जून 18 जून का दिख भी गया. तो बेसिकली मार्केट अभी अप ट्रेंड की तरफ जा रही है. With a gap down, there is a gap, and market right now फिर अभी जो है कंसोलिडेट है in this phase, and right now he is going to uptrend, and now uptrend, and after this under is now downtrend, down. भाई मैं जा रहा हूँ सब्सक्रिप्शन लेने. ओके, सो बेसिकली कौन सा लूँ? तो भाई ये 30 दिन का चाहिए, ये लूँगा. ठीक है. फर्स्ट नेम आसिफ अली. ओके, क्या करूँ, अभी लूँ या नहीं लूँ? अभी लूँ या उस दिन लूँगा? फोन नंबर ऐड करना होगा भाई. पैन, यूपीआई. ओ, I'm signing up for 3-day free trial.
I agree that if I do not cancel during the trial period, okay, okay, valid PAN card. तो पैन कार्ड किसका दे दूं भाई? पैन कार्ड मांग लेता है भाई, यही गड़बड़ है। यही सबसे बड़ा गड़बड़ है भाई। 50,000 एक साल का। 30 अगस्त को मांगेगा मेरे से। कल करता हूँ। ओके। ओके, so tell me, if there is no option of pack farming, okay, then what will be the, then I can see the charts on trading view also. Yeah, actually what I was about to suggest. Suggestion, I actually think trading is the better platform for chart reading and Amplify the better platform for execution. Yes, I will split them, trading view learning and analysis chart Amplify education. Okay. But here's the important part. Earlier you said I'm just looking at complete chart. That's not okay. If you are learning chart reading, don't think I'm backtesting my strategy. Think I'm studying how market moves. Those are the two. Chart study. You can absolutely use completely chart. Ask why did price really not? This is different. You should not see the future because testing where okay अगर ये कुछ इस हिसाब से रहेगा मार्केट। ओह, ये सही है वैसे भाई। हम्म। इसको मैं थोड़ा सा करेंसी एंड यूज प्राइस कैसे ऐड होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा नहीं बोल। बेसिकली मैं अगर ये करूँ, है ना, तो सपोज डैट मार्केट कुछ इस हिसाब से चल रहा है और अभी जो है मार्केट जो है कंसोलिडेट मोड में है। ओके, या ये मैं कम कर सकता हूँ। अभी जो है मार्केट कंसोलिडेट में है और वो मैं एक्शन मिलाता हूँ। अगर यहाँ तक आता है तो ऊपर ही चला गया मार्केट।
आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। और ये इस जोन को ब्रेक करते हुए, इस जोन को ब्रेक करते हुए, तो बेसिकली आई एम सेइंग यू अबाउट दिस जोन। ओके, बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि इस जोन पर मार्केट ना आ जाए। इस जोन पर आया, फिर इसने रीटेस्ट करा और ये बढ़ा। ओके, और अब ये इसी जोन से, देखो इसी जोन से ये ब्रेकआउट दिया है, इसी जोन से एक बुलिश इंगल्फिंग दिया है और ये ऊपर गया है और ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, बेसिकली ये जा रहा है ऊपर, जा रहा है ऊपर। ओके, या ये जो एक है। ओके, सो सपोज दैट मैं किसी और टाइम फ्रेम का निकालता हूँ। ओके, जहाँ से हम देख सकते हैं वहीं से देखेंगे। ठीक है, बेसिकली ये कुछ इस हिसाब से स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, ये कुछ इस हिसाब से स्ट्रक्चर बना रहा है और इस जोन को, बेसिकली इस जोन को एक बार रीटेस्ट कर ऊपर गया। लेट मी सी। तो बेसिकली इस जोन को ये छू कर ऊपर गया है पहला टाइम पर। अरे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, देखो यहाँ पर इसने एक बुलिश एंगल्फिंग दिया, यहाँ पर भी एक बुलिश एंगल्फिंग दिया। हालांकि यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग दिया, बट अगर बुलिश एंगल्फिंग दिया, ठीक है, और बट नहीं हुआ, फेल हो गया, बट अगला बेरिश एंगल्फिंग दिया। ठीक है, बेरिश एंगल्फिंग दिया तो मार्केट कितना नीचे जा रहा है, मार्केट कितना नीचे जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। क्या ये इस सप्लाई को लिया है? सप्लाई को देखते हैं, क्या ये वाकई में इस सप्लाई को लिया है क्या? ओके, और अगर मैं इसको थोड़ा पर ही काउंट करूँ यहाँ तक, यू कैन से दैट कि हाँ, ऑलमोस्ट इसी सप्लाई को लिया, कह सकते हैं।